I was contacted by the Prime Minister. He offered to me a briefing from CSIS, which of course I said yes, I would like that. We arranged it. We got a briefing from the director, which was, as I say, open source information, and then that was it. I expressed my frustration. Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. जस्टिन ट्रूडो के हवाले से एक सर्वे सामने आया है, एक पोल सामने आया है, जिसमें ये पता चला है कि उनका की पॉपुलैरिटी कम हुई है. In which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. मैंने कहा कि नहीं, ये यानी आप ये कह सकते हैं कि उस तरफ से जो है वो जस्टिन ट्रूडो पे काफ़ी जो है वो इसके ऊपर बात की गई है, टैक्स हुआ और कहा गया कि ये जो है ये आप ये तहरीक वहाँ पे चलवा रहे हैं या आप इसके अंदर शामिल हैं, तो जवाब तो आपको देना चाहिए. आलमी सतह पर हम तमाशा बन चुके हैं. चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा है और हमें कोई वीजा नहीं देता. And the fact of the matter is, India is the world's largest democracy. It's far more important strategically, arguably, than Canada is. तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि अगर हम आप यूएस की भी बात करें तो यूएस भी स्टैंड कर रहा है भारत के साथ और यूएस भी प्रूफ मांग रहा है ट्रूडो से, तो क्या कहते हैं आप? और ये भी बोला है कि भारत इज मच मोर इम्पोर्टेंट, भारत की ज्यादा अहमियत है. नमस्कार दोस्तों, अब कैनेडियन मीडिया से लेकर कनाडा के पॉलिटिशियन और कनाडा के आम नागरिक अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पर गलती कर दी है इंडिया के साथ पंगा लेकर, और ये सिचुएशन उतनी ख़राब होती जा रही है कि भाई उसकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है कनाडा के अंदर वो भी कम हो रही है. और कोई भी प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट, उसकी जो पॉपुलैरिटी का रेटिंग होता है वो जो डाउन होती है ना, उससे वो बहुत घबराता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई, और ख़ास करके जब इलेक्शन नज़दीक हो, खास करके वो पार्टी का उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हो जिसकी बहुमत है ही नहीं गवर्नमेंट में, उसको ये जो खालिस्तानी समर्थक पार्टी है उससे उसने सपोर्ट लिया है और तब जाकर गठबंधन वाली सरकार बनी है. कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि सिचुएशन ऐसी हो रही है कनाडा के लिए कि भाई पूरी दुनिया अब उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर चुकी है कि भाई ये जो स्टेप लिया है ना वो गलत, बहुत गलत स्टेप है और आपको यहाँ से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है. इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं. Briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. And so I can be transparent about that information that I've received. In terms of the specific incident in Surrey, I was contacted by the Prime Minister. He briefed me about what he was going to say in the Parliament, which he then went on and said. He offered to me a briefing from CSIS, which of course I said yes, I would like that. We arranged it. We got a briefing from the director, which was, as I say, open source information, and then that was it. I expressed my frustration in the meeting with the CSIS director about our inability to get more concrete information about this kind of thing, and I have articulated that to the federal government. I understand there may need to be reform around the act that governs CSIS in order for them to be able to share this information. If that's what's required, let's make it happen. Because the only way that we're going to make traction on this is by the federal government trusting the provincial government with information and being able to act on it in our local communities. Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. There's two possibilities here. Either he was shooting from the hip and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government, or there is something there, in which case he needs to explain why his government was sheltering a terrorist with blood on his hands. Now, there has been some reporting about, how weeks before the world leaders were to meet in Delhi, Canada did approach its allies to jointly raise this issue at the summit. Do you think there was some kind of a discussion like that and, the allies stepped back and didn't do that? Well, as a former consumer of intelligence, I can say that oftentimes the intelligence we see, whether it's a telephone intercept or something else, isn't as black and white, isn't as cut and dry as oftentimes politicians want it to become. I mean, certainly that was the case with regard to the Iraq war.
So when you have a situation like this, perhaps Prime Minister Trudeau raised the issue, but there wasn't necessarily consensus on what it meant. And regardless, let's not fool ourselves. Hardeep Nijar Singh, let's not fool ourselves. Hardeep Singh Nijar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. He had blood on his hands through multiple attacks, and therefore, while Secretary of State Blinken may after the fact say that the United States will always stand against transnational repression, we're actually being hypocritical if Secretary Blinken makes that statement, because after all, what we're talking about isn't transnational repression. We're talking about transnational terrorism, and what the United States did to Qasem Soleimani and what the United States did to Osama bin Laden is really no different than what India is alleged to have done in this case. Well, frankly, there's a much greater danger for Canada than India. If Canada wants to pick a fight, frankly, at this point, it's like an ant picking a fight against an elephant. And the fact of the matter is, India is the world's largest democracy. It's far more important strategically, arguably, than Canada is, especially as concern grows with regard to China and other matters in the Indian Ocean Basin and in the Pacific. ये जो बात की गई है अमेरिका की तरफ से, आपको पता है ये क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है क्योंकि इंडिया हाथ नहीं पकड़ा रहा था। यानी हमने ये देखा कि जब ये एक सीरीज ऑफ इवेंट सामने आए या स्टेटमेंट सामने आई, और जब से कनाडा की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब ने जब ये उनको ये बात सामने लेकर आए, वैसे तो उनको पार्लियामेंट में करने के बजाय देखें जो डिप्लोमेटिक वे है उस तरीके से करनी चाहिए थी, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, ये जो है ये हर कोई ऐसे ही समझता है। लेकिन अगर वो उसमें भी ले आए तो उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने काफ़ी बात की, मामला बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कहा गया कि मामला तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है दोनों मुल्कों के बीच। तो फिर भी हमने ये देखा कि इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि वो कहे कि हाँ जी ठीक है आप कहते हैं तो हम कोऑर्डिनेट कर देते हैं, हाँ जी। वहाँ से जो उसकी तरफ से बड़े ही ठोक बजा के डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये यानी आप ये कह सकते हैं कि उस तरफ से जो है वो जस्टिन ट्रूडो पे काफ़ी जो है वो इसके ऊपर बात की गई है, टैक्स हुआ और कहा गया कि ये जो है ये आप ये तहरीक वहाँ पे चलवा रहे हैं या आप इसके अंदर शामिल हैं, तो जवाब तो आपको देना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में फिर अब इस स्टेटमेंट का सामने आना और अमेरिका की तरफ से ये कहना कि प्लीज़ आप जो है वो कोऑर्डिनेट करें, तो ये ऐसा होना ही था, जाहिर है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बड़ी ही कामयाब स्ट्रेटजी रही है भारत की कि जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इस तरीके से लिया है, तो उनके उस पर बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी रही कि उन्होंने आगे से बोलने ही नहीं दिया, और अब जो है वो कहना पड़ा कि आप कोऑर्डिनेट करें। एक तो मैं इसको ऐसे देख रही हूँ। अब इसी बात का दूसरा पहलू क्या है, वो ये है कि जो पाकिस्तान की मीडिया में ये चल रहा है कि ओहो ये तो कमाल हो गया भाई, अब तो तबाही आ जाएगी, अब तो बस बहुत हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि जो कनाडा और इंडिया का मामला, उसके ऊपर इंडिया की और अमेरिका की तो लड़ाई शुरू हो गई है। मतलब यहाँ तक हुआ कि अमेरिका और इंडिया की लड़ाई, ये बड़े बड़े जाली हरूफ में जो है लिखा जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लड़ाई